Hello, friends. Welcome in our series of law. In the series of current judgments, recent judgment, today we are going to deal with one judgment which is related to how to prove a will. The judgment talks about the different steps related to proving a will. The case law is delivered in 2017, hence, the provisions are related to Indian Evidence Act. Now, all these related provision will be dealt under Bharatiya Bharatiya Sakshya Adhiniyam. Let's start. The case is Ramesh Verma, who is dead through the LRs, versus Lajesh Saxena, dead by LRs and another. Please check the spellings and another. Before going into the judgment, let's discuss about the parties of a will. This is not given in the judgment. I was just explaining it for the sake of your knowledge. Will, like any other document, is proved under Indian Evidence Act or now under Bharatiya Sakshya Adhiniyam. There are three parties to a will. First one is testator or legator, the person who creates the will. We can say the maker of the will. Second one is beneficiary or legatee. This is the person or organization for which this will is created. For whom the will is created or who is receiving the property of the testator. And third and the last one is executor, the person who distribute these properties, the person who is going to execute this will. Like if I have made a will for my 7-year-old son, he is a minor, so I have to create one party who will execute it if I dies in between. I may make the executor to the uncle of my child or anybody else or manager of my property. This is the person who is called with the name of executor. Now come to the judgment. The judgment has laid down 4 steps of proving a will. All these steps are given under different sections of Indian Evidence Act or Bharatiya Sakshya Adhiniyam. I hope you must be aware of these sections and you won't forget to write these sections, the provision, in the comment box. First step is the propounder of the will is called upon to show that the will is signed by the testator. जो भी अब विल लेके कोर्ट में जाएगा तो वो कैसे प्रूव करेगा कि ये बिल जो है इस पे साइन जो है वो टेस्टेटर के. दिस इज द फर्स्ट स्टेप that he has to prove the sign of the testator. Second one is the testator at that relevant point of time was in sound mind of state. We must have seen, बहुत सारी मूवीज में बहुत जगह हमने देखा है कि फेक विल्स ले आते हैं, फॉर्ज्ड विल ले आते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक टाइम पे कई बारी 2 विल्स भी अवेलेबल होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं. तो इसलिए हमें ये प्रूव करना होता है कि वो जो विल है एट दैट टाइम जब विल बनाई जा रही थी, द टेस्टेटर वॉज इन साउंड स्टेट ऑफ माइंड. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसकी फर्स्ट कंडीशन ही यही होती है कि दैट द मेकर मस्ट बी इन द sound state of mind. And the third step is testator understood the nature of the disposition and put his sign to the document of his free will. This is again given in contract act कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहा है टेस्टेटर, उस पर जो उसके साइन है वो उसकी फ्री विल से होने चाहिए. ही मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि इस डॉक्यूमेंट को साइन करने का, इसको प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने का क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगा. एंड द लास्ट वन इज द डॉक्यूमेंट शैल नॉट यूज्ड एज एविडेंस अनटिल एंड अनलेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमने पढ़ा भी है एविडेंस एक्ट में बार बार. किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने का स्टेप, नॉट ओनली फॉर विल, फॉर एनी डॉक्यूमेंट, जब तक कि एटलीस्ट 1 अटेस्टिंग विटनेस वहाँ पे एग्जीक्यूशन के पर्पज़ को प्रूव नहीं करता, तब तक उस डॉक्यूमेंट को हम एज अ एविडेंस यूज़ नहीं करते. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.